Hey friend, today I want to discuss about quicksand condition. In last video where I discussed about what is seepage and seepage pressure and seepage force and what is the seepage force per unit area per unit volume. So guys, if you are not watching still now, so you must be seen and there should be an I button so you can click it. So guys, today before start the quicksand condition, I have to say something about the effective stress, because without effective stress I cannot introduce the quicksand condition. So as I didn't do any kind of video about the effective stress, so in this video I do some short way I say about the effective stress, and in some future video where I make a video about effective stress very detailed. So what is the effective stress? इसका सिंपल सा ये मीनिंग होता है, मतलब व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेस, तो फाइनल कितना स्ट्रेस काम कर रहा है. जैसे कि मान लो, आई गिविंग यू एग्जांपल, you have some exam, okay, you have some exam, so you think that you are doing hard work for getting of 10 out of 10, but ultimately when your result has published, then you find that you are getting 8 out of 10. So what is the ultimate result, what is the effective result? It is the 8, but what क्या होना चाहिए, क्या था 10 होना चाहिए था, बट हो गया 8. सो देयर इज -2. ठीक है, सो व्हाई दिस -2, किसके लिए -2 आया? सो व्हाट इज द effective stress in soil? So we know that soil is three-phase system where there is a present air, water and soil solid. Okay, so we need to find out that if we apply some external load, so how much load soil solid can resist for survival purpose. Okay, we know that what is stress. Stress is a resisting force per unit area. Okay, in previously, if it was a fluid or if it was the rigid material, so we treat as these all are the what, homogeneous. मतलब rigid मतलब पूरा rigid है, there is no types of fluid or some air. fluid मतलब पूरा ही पानी है, कोई सॉलिड वगैरह कुछ नहीं है. सो जब यहाँ पे फोर्स अगर मैं अप्लाई करूंगा तब क्या होगा, मैं सिंपल लिख सकता हूँ स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर एरिया. ठीक है, या भी वैसे लिख सकता हूँ फोर्स पर एरिया. तो वैसे भी सॉइल्स के इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, मतलब मैं स्ट्रेस लिख रहा हूँ पहले, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर एरिया. ठीक है, तो बात ये पे खत्म होना चाहिए था, बट यहाँ से शुरू होता है इफेक्टिव स्ट्रेस. ये जो फोर्स पर एरिया है, कौन सा फोर्स है? इसका फोर्स का मतलब है ये पूरा फोर्स जो रजिस्ट हो रहा है ड्यू टू एयर, वाटर, सॉलिड, सॉइल सॉलिड, ये पूरा का पूरा एरिया इन सारे के लिए. बट हमको क्या निकलना पड़ा है, we only find then what amount of stress resist by soil solid. So air is negligible. So in this system we consider the two stress. One is stress due to water, one stress is stress due to soil solid. So अगर we need to find out the only stress due to soil solid, so पूरा का पूरा जो टोटल स्ट्रेस है, तो यह से वाटर का जो स्ट्रेस हो नेगेटिव करना पड़ेगा. तो ये हो गया टोटल स्ट्रेस ड्यू टू वाटर प्लस सॉइल सॉलिड. ठीक है, स्ट्रेस ड्यू टू
soil we have to find. So stress due to soil मैं लिख सकता हूँ stress due to water plus soil solid minus stress due to water. So that ये stress due to soil को हम कह सकता है effective stress minor equal to stress due to water plus soil solid मतलब bulk unit bulk stress minus stress due to what? Water. Bulk stress मतलब stress हम लिख सकता है stress मतलब लिख सकते P that is a pressure rho g मतलब गामा into H. So मतलब ऐसे हो गया तो स्ट्रेस लिख सकते हो गामा इंटू मल्टीप्लाइड H. व्हाट इज द गामा? बल्क मतलब गामा बल्क. अगर सैचुरेट होगा तो सैचुरेट होगा, ड्राई होगा तो ड्राई होगा, अगर सबमर्ज है तो सबमर्ज होगा. तो ये गामा बल्क माइनस स्ट्रेस ड्यू टू वाटर गामा इंटू H. तो वाटर के लिए गामा W इंटू H. दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस. So this is the small just summary of all about effective stress. So now I can start what is the quicksand and effective stress के साथ quicksand का क्या रिलेशन है वो भी मैं बताऊंगा. So चलिए शुरू करते हैं. Let's get started. quicksand. पहली बात है ये तो कोई this is not any kind of special types of sand. It is not a special type of sand. Okay, so mind it. तो चलिए देखते हैं क्या होता है. So ये हम लोगों का क्या है? ग्राउंड है. दिस इज द ग्राउंड GL. और यहाँ पे सॉइल है. हो सकता है यहाँ पे एयर वाटर बहुत कुछ है. ठीक है. तो क्या हो स्ट्रेस का व्हेन द स्ट्रेस इज जनरेटेड व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड. ठीक है. व्हेन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड द लोड व्हाट इज द नेचर ऑफ लोड? लोड ऑलवेज सेटल दिस सॉइल सॉलिड. बट सॉइल क्या करेंगे? सॉइल wants to reacted due to to maintain the equilibrium. This is the correct. So मान लो मैंने यहाँ से एक सेक्शन ले लिया. ओके, सेक्शन मैं ड्रॉ कर दूंगा. दिस इज अ सेक्शन. ठीक है. और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? मिट्टी है. और मान लो इतना तो क्या है? वाटर है. ठीक है. तो क्या होगा? अब ऊपर से एक एक्सटर्नल लोड अप्लाई करो. सोच लो यू आर वॉकिंग ऑन द सॉइल. एवरी डे यू आर वॉकिंग ऑन सॉइल. सो व्हाट इज हैपन? कभी कभी when you are walking on the soil is its own position. Sometimes you are walking on the soil like a sea beach. Soil is slightly down or slightly deformed. You can feel it. You can saw it in previously. So होता क्या है? So when you applied the force or force per unit stress, मान लो स्ट्रेस एक्सटर्नल स्ट्रेस ना प्रेशर एक्सटर्नल. दैट इज द गुड टर्म. if pressure external equal to effective stress, then your soil doesn't deform. When pressure external greater than sigma effective, then your soil start to deform. Okay,
बट ऐसा कभी हो सकता है P external greater than sigma effective which is 0, तब क्या होगा? Applying your common sense, then जब when you are applying load, soil start to deform gradually or very quickly. So in the soil mechanics, these phenomenon is known as quicksand condition. And those who are the Bong people, Bong guys, that is the Churobali in our seaside. Okay. So अब हम दिखूंगा why soils getting starts deforming quickly. Okay. So let's get started. So first we need to see what is a sigma effect. Sigma effective, that is the gamma into H minus water pressure gamma into head loss. तो दिस इज द गामा इंटू H गामा इंटू L कर दे रहा हूँ, थिकनेस ऑफ सॉइल स्टेटम, एंड दैट इज द हेड लॉस. ठीक है, ओके. अब मान लो बात कुछ ऐसा है, ये आपका ग्राउंड पोजीशन है, आपको पता नहीं है, सॉइल पूरा का पूरा सॉइल है, मिट्टी भी है. तो मान लो अगर सॉइल के पूरा का पूरा वाटर है तो वी कैन से इट सॉइल इज सबमर्ज इन वाटर, राइट और रॉन्ग? सो अगर सॉइल इज इन सबमर्ज कंडीशन, so gamma should be gamma submerged into L, and that is the gamma water del H. Okay. but मान लो ऐसा हो गया stress due to water that is equal to stress due to submerged soil. तब क्या होगा? गामा इफेक्टिव का वैल्यू 0 हो जाएगा. सो मैं कहा ना गामा इफेक्टिव 0 कब होगा? जो क्विकसैंड होता है. इन क्विकसैंड कंडीशन गामा इफेक्टिव का वैल्यू दैट इज 0. ओके, तो लिख सकता है 0 इक्वल टू दिस, सो गामा डैश L that is equal to gamma W del H. We know that what gradient I equal to del H by L, so del H equal to I into L. हम लिख सकता है gamma dash equal to gamma W equal to I, and gamma dash we know that gamma W G minus 1 and G plus E plus 1 or 1 plus E, that is the gamma W I. So in quicksand condition the hydraulic gradient is known as critical hydraulic gradient IC. So in quicksand condition hydraulic gradient is known as critical hydraulic gradient, that is the IC equal to critical hydraulic gradient. Okay, so IC is G minus 1 and 1 plus E. So those who are in diploma or BTech, they have some math from this formula. Okay, so quicksand condition में जो gradient हमको मिलता है, this is known as hydraulic gradient. So हमको क्या करना चाहिए? So ये जो मैंने लिखा था इससे मैं फिर एक बार लिख रहा हूं, फोर्स प्रेशर एक्सटर्नल इक्वल टू सिग्मा इफेक्टिव.
That means अगर gradient हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के साथ अगर इक्वल है, there is no problem. This external greater than sigma effective, that mean gradient greater than IC IC, then quick start condition started. B external less than sigma effect T, that means I less than IC, that is also a stable condition. This is the stable, this is stable, this is unstable. So we are the civil engineers, what do we have to do? When we construct a hydraulic structure near the water or water body, we need to check out what is the critical gradient using G minus 1 plus E. And critical gradient always depend on what? Specific gravity and void ratio. So we find out the IC and what kind of gradient we applied to our hydraulic gradient. So our applied grade for stable condition, for our applied gradient, I must be less than IC. Okay. So that is the stable condition. So this is the mathematically what quicksand condition and क्या होता है this is. But why is quicksand condition? Because when your बाहर से अगर लोड ज्यादा है और सिग्मा इफेक्टिव 0 है तो क्या होगा? We are quickly going downwards. और मान लो जहां से अब लोड दे रहे हैं वहां से आपको पंचिंग हो रहा है, पंचिंग फेलियर हो रहा है, मतलब पंच घुस जा रहा है और उससे एडजेसेंट जो एरिया है वहां से पानी के साथ सॉइल सॉलिड मतलब सैंड ऊपर आ रहा है एज अ फॉर्म ऑफ बबल. दैट इज हैपनिंग वेरी क्विक. That is why this is known as your quicksand condition, or someone says that boiling of sand. So, if you want to write what you mean by quicksand condition, so you may write when flow takes place upward. So guys, the next confusion is there. Flow upward कैसे होता है यार? Flow always go to the maintain the gravity, right? So why this is upward? Simple thing is that this is your stratum and you apply this force, okay? So भाई ये चीज ना पंचिंग फेल्यूर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर पंचिंग फेल्यूर होगा तो इस यहाँ पे एडजेसेंट जो बन रहा है तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. और इसको कौन रेजिस्ट कर रहा है? सॉइल से रेजिस्ट कर रहा है. बट वाटर रेजिस्टिंग और नॉट. सो वाटर रेजिस्ट नहीं कर रहा है तो मतलब वाटर का फ्लो अपवर्ड ही होगा, बिकॉज आप इसको दबा रहे हैं तो वो से वाटर निकल आ रहा है. दैट इज व्हाई क्विकसैंड कंडीशन तभी होगा जब फ्लो टेक प्लेस अपवर्ड. ओके, सो व्हेन फ्लो टेक्स प्लेस अपवर्ड, so due to upwardness, so water is going upward, so definitely seepage pressure is happening in the upward. So seepage pressure acts
in upward direction, and gradually what? Effective pressure is reduced to 0. And in that scenario, what? Soil solid lost its shear strength. यार अगर shear strength अगर लॉस नहीं होगा तो कैसे पंचिंग shear होगा? सिंपल बात है, तो shear strength लॉस हो जाएगा। अगर shear strength लॉस हो गया तब क्या होगा? So shear strength losses gradually seepage pressure and pressure due to soil getting equal. Okay, so that scenario, but that condition, but that phenomenon is known as what? Quicksand condition. So guys, the thing is that this video is too much lengthy, as the previously I uploaded all the video. So guys, see it very properly and be patient. And yeah, definitely thank you for watching this video, and if there's any kind of doubt in any section, so do comment in the comment section. And yeah, definitely again thank you for watching this video.